जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से आज हम हंसा चक्र के बारे में देखने वाले हैं और उसको शुद्ध कैसे करना है वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस आज की परिस्थिति में हंसा चक्र बहुत ठीक रहना, संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। एक अमृतवाणी ने, माँ ने हंस चक्र को फिल्टर कहा है। जो कुछ वायरस बैक्टीरिया बाहर से हम पे अटैक करते हैं वो हंस चक्र उसको फिल्टर करता है और हमको उस परेशानी से दूर रखता है। ये सारे जो हंस चक्र की पूजा है ये सारे फॉरेन में होने के कारण बड़े बड़े स्पीच सारे इंग्लिश में है, तो भी कुछ स्पीच में का जो थोड़ा रेफरेंस है हिंदी में मिला है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हंसा चक्र के बारे में माँ से हम आत्मसात करते हैं। So this is the place where these interchanges take place between both the nadis, and here the Hamsa lies outside the path of Kundalini. They sort of come out here, out of the path of Kundalini. It's very surprising. When the Kundalini moves, she goes from Vishuddhi direct to Agya. Now, how can we improve our Hamsa then? It's a big problem. Because if our Hamsa is sick, is over-conditioned, the Kundalini cannot work on it. It just gives up. Now, so for Hamsa we use all these physical things. Like I said, put the ghee in the nose. Keep it in a way that it is nourished properly. Because Kundalini, if it tries to, too much will have problem because as it is, most of our time we spend in such a manner that your Hamsa things become what you call the epithelial cells, the linings become dried out. Now when the Kundalini rises, she may try to create a problem more for that dryness. Maybe. So it is kept out, but it has an effect in the sense that even if there is a light outside, it can fall inside. So it's not the Kundalini directly that affects your Hamsa. It is like when the Kundalini awakens, you yourself see now that a person is, whether he is fair complexioned or dark complexioned, he is a human being, you reason it out and Hamsa clears up. Then you see yourself that, oh, I am very egoistical. You start seeing yourself through your Agya. Start seeing that I am so conditioned. So you reason it out. And that's how you correct your conditionings. This is what is Hamsa Chakra. So Hamsa Chakra cannot be done if just you are a realized soul, but is an effect, is the symptom of your Kundalini awakening. Some people think that you develop discretion just as the Kundalini rises. Is that wrong? No. That has to be deliberately seen, that you build up that discretion within yourself. हंसा का सबसे इम्पोर्टेंट गुण माँ ने बताया कि खुद को, खुद की परेशानी देखने का यह हंसा हमको बताता है और फिर वो परेशानी को दूर करके संतुलन में लाने का काम यह हंसा द्वारा हम खुद के लिए कर सकते हैं, यानी इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में कुंडलिनी के मार्ग पे ये चक्र नहीं आता है, इसीलिए इसको बाहर से पोषण करना पड़ता है, इसीलिए घी कैम्फर का महत्व माँ ने इसमें बताया है। दूसरा वीडियो हम देखते हैं जिसमें घी के बारे में माँ बता रही है, वो हिंदी में है। जल्दी
दूसरी बात है, ये बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद जरूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जय श्री माता जी। तीसरा जो वीडियो है वो हंस चक्र और उससे संलग्न 3 चक्रों से जिसका संबंध है उसके बारे में माँ बता रही है, वो हम आत्मसात करेंगे। हमसा चक्र Hamsa Chakra is placed here where some of the nerves which are coming from Ida and Pingala cross over and is a part of Vishuddhi Chakra. Plus the connection with Vishuddhi and Agya, as you must have read in the Devi Mahatmya, that Sri Krishna is the father of Christ. So the connection between the two is maintained here. And this is very important, Hamsa Chakra is, that if your Hamsa Chakra is not all right, your discretion is very poor. This chakra get easily dried out. Like if you eat very dried food, you see, say, sometimes you also offer me some dry fruit and I have to tell you that not to give too dry fruit. You must eat it with some sauce or some liquid thing, because if you eat very dry fruit, also this becomes very dry. And it's very important, because if this portion becomes dry, you can put some oil or ghee into it to make it alright. But from here starts the drying of the peritoneum, is the lining. If the peritoneum gets dried up, the whole body gets dried up. Could be anywhere in the lung. If it is dried up, it can cause you lung cancer. Even peritoneum can be in a cancer state. So one has to be very careful not to take something very dry, all the time dry food and dry things. Moreover, not to put anything to make this lubricant. Some sort of a lubricant should be there, so there is no problem on this chakra. Because first of all, it loses your discretion. You don't understand things. You don't know what to do. You mean it. You mean good, but you don't do. When you achieve something, it's something not so good. The reason is your discretion is poor. For that, this must not be made dry. I have told many a times to put some ghee every day. Get a little bottle of ghee. Keep it with you with a little dropper. You can put it in the hot water, can heat it up every day and take 2 drops in the nose in the night and in the morning time. It doesn't take much. It should be done. It's for your good. You must put some heated butter in the nose, all of it. There. Inside? Inside. With a dropper. Alright? Keep your head right. Heat butter and sieve it up. And then when it is slightly warm, not very warm, absolutely slightly warm, then put it in your nose. Very important. Because I don't know, in this country people, it's a very simple thing to be done. Once in a while, about say 2-3 days later, or even every day you do, doesn't matter. It's like putting cream on your hands. You see, because the cold weather also chaps inside lining of the nose. And when you put this, it makes the nose smooth and you don't get troublesome. It's very simple. All of you should do. All the Sahaja Yogis are supposed to do. There are so many things Sahaja Yogis are supposed to do. One of them is this. That try to keep your Hamsa Chakra alright. By keeping your nose alright, you keep your Hamsa Chakra better.
So better use this simple method of heating some ghee, we call it. You see, you can prepare it, heated butter, keep it in a bottle with a dropper and heat it in the hot water and then put it in the nose, just like that, in the night before sleeping. Even in the ears, you must put olive oil. It's very important. For the teeth also, you must take some salt, put some olive oil and rub your gums. जय श्री माता जी। इस अमृतवाणी में माँ ने नाक में जैसे घी छोड़ते वैसे आप मक्खन भी गर्म करके गुनगुना करके नाक में छोड़ने के लिए बताया है। अभी उसी में और एक छोटा सा पार्ट है, वो हम देखेंगे। Small things must be taken care of. You see? Now, if you have too much of cold, just a minute. If you have too much of cold, then you can mix up little camphor with oil and put that in the nose. Little actually, not more. That also is very good. That also soothes your cold and puts you right. This country has one big problem, is Hamsa Chakra everywhere. जैसे कि सर्दी में आप कैम्फर मिला हुआ घी नाक में छोड़ोगे तो सर्दी खांसी में भी सर्दी में उसका असर आता है, ये माँ ने बताया है। इसके पहले की वीडियो में ये भी बताया था माँ ने, जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंडी हो तो हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो ड्राई हो जाती है। तो जैसे हम बाहर से मॉइस्चर लगाते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कुछ, वैसे ही हंसा चक्र के अंदर जो कुछ पेशियाँ है, एपिथेलियल सेल्स उसे कहा है मेडिकल साइंस ने, वो ड्राई न होने के लिए हमें घी कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे का वीडियो हिंदी में है, उसमें भी माँ क्या कहती है देखते हैं। थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती है। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते। तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं। उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान, इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है। लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत है? ये महाविष्णु का स्थान है। और जय श्री माता जी। अभी ये एक इंग्लिश वीडियो है जिसमें माँ हम सब से हंसा चक्र का मसाज करा के लेने वाली है। हम सब लोग जैसे माँ करती है वैसा हम करेंगे। Now bring it here. Vishuddhi. Must move Vishuddhi quite a lot. This is the Virata's thing. Now the Agya. Now the Hamsa, just with this finger. Better now?